Assalamu alaikum everyone. Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome to our new video. Today we are going to discuss another topic in paragraph writing, and today our topic of discussion is a visit to a hospital. This class is about class 9th and 10th grammar, English grammar, and today we are going to discuss a visit to a hospital. This is our topic of discussion, a visit to a hospital. Fine. So let's start with this reading. Last summer, I went to the hospital with my father to inquire after the health of his injured friend. I saw the pitiable condition of the patients in the ward. There were about 30 beds with patients either laying or reclining. About half a dozen of patients were moaning miserably and their condition was critical. One of them stopped moaning after about half an hour, and I was shocked to learn that he had expired. After a couple of hospital formalities, the dead body was handed over to his relatives. In the nearby outdoor department of the hospital, in the nearby outdoor department of hospital, there were pathetic scene. Ailing children were wailing. A few women suffering from some diseases were laying outside under a tree. They looked more like skeletons. An unconscious patient was being carried on stretcher. Some boys were brought on cots with fractured bones. A profusely bleeding woman injured in an accident was being taken to the casualty ward. There were some bandage patients who winced with pain. The courtyard and the corridor were crowded, and the sight of suffering was unbearable. Before leaving the hospital, I muttered sincere prayers for the patients. Now we will learn the translation of this paragraph in Urdu. So let's start. Class 9th and 10th paragraph writing, Urdu translation. गर्मा गुज़श्ता मौसम गर्मा में अपने वालिद के साथ अपने ज़ख्मी दोस्त की खैरियत दरियाफ्त करने गया। मैंने वहाँ मरीज़ों की काबिल रहम हालत देखी। वहाँ तकरीबन 30 के करीब बेड ऐसे थे जिनमें मरीज़ लेटे हुए थे। निस दर्जन के करीब मरीज़ बुरी तरह कराह रहे थे और उनकी हालत तशवीशनाक थी। उनमें से एक ने आधे घंटे के बाद कराहना बंद कर दिया और मैं ये जानकर हैरान रह गया कि उसकी मियाद यानी वो एक्सपायर हो गया, उसकी डेथ हो गई। अस्पताल की कुछ रस्मी कार्रवाई के बाद मय्यत जो है वो लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। अस्पताल के करीबी आउटडोर डिपार्टमेंट में रिक्कत आमेज मनाजिर थे। बीमार बच्चे रो रहे थे। बाहर एक दरख्त के नीचे किसी बीमारी में मुब्तला चंद औरतें लेटी हुई थी। वो ऐसे लग रही थी जैसे सिर्फ ढांचा हो, कंकाल हो, कुछ भी ना हो, उनमें सिर्फ ढांचा हो। एक बेहोश मरीज को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। कुछ लड़कों को चारपाइयों पर लाया गया जिनकी हड्डियां टूटी हुई थीं। हादसे में जख्मी होने वाली एक खातून का खून बह रहा था जिसे एक कैजुअलिटी वार्ड में ले जाया जा रहा था। कुछ पट्टी वाले मरीज थे जो दर्द से सर झुकाए बैठे थे। ठीक है। सेहन और राहदारियों पर हजूम था और तकलीफ की जगह नाकाबिले बर्दाश्त थी। अस्पताल में निकलने से पहले मैंने मरीजों की सेहतयाबी के लिए मुखलिसाना दुआएं मांगी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।